continuing the data, let's try to put the things into the formula. If you observe carefully, what are the elements used here? P1, Q0, which means first column is required is P1, Q0. Another one, denominator, P0, Q0, which means the second column required is P0, Q0. Likewise, read the third one, P1, Q1. So the third column is P1, Q1 and the last denominator P0, Q1. Why only 4? Why not IL into IP? Because IL and IP will be available after substituting these answers. Make sure there are sigmas. All are prefixed with sigma, which means we require the total of all these columns. How to multiply this? Be careful while multiplying because many of the students get wrong answers while multiplying wrong columns. So make sure this one is P1 Q0, so you need to multiply P1 and Q0. Are you getting me what I mean to say? We need to multiply P1 Q0. P1 is this one, 40, and Q0 is last one. So we are multiplying 40 ones are this line, 40 ones are 40. Likewise, this way we are progressing. Second question, 44 into 12. Multiply carefully. P1 into Q0. 44 into 12. So it gives you 528. Similarly, 50 into 2. P1 into Q0. 50 into 2 shall give you 100. The fourth one. What's the question? Dhyan se. 36 into 2 shall give you 72. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This line is already used in multiplication. P1 Q0. So we will make a total in the end. Same P0 Q0. Check कीजिए कौन सा line multiply करेंगे. P0 Q0, which means P0 into Q0. ये रहा P0 Q0. पहले डिसाइड कर लीजिए P0 Q0 कौन है, बस उसके ऊपर फिंगर करके फिर आप डिसाइड कर सकते हैं. 39 into 1. Likewise, are you getting the point? Okay, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कैलकुलेटर की हेल्प से. 40 into 12. 480. Similarly, 45 into 2. 90 and 30 into 2. 60. I'm sure you are getting the answers. Now, P1 into Q1. P1 into Q1. Those pillars or those columns which are very much near, you can multiply easily. But which are far, you should be careful. So this is P1 Q1 nearer one. So 40 into 1.5. Multiplication of 40 into 1.5 is 60. 44 into 10. 440. 50 into 1.5. 75. And 36 into 1.5. How much it comes? It is 54. So calculate carefully. Last is P0 Q1. P0 Q1. P0 and Q1. Again P0 Q1. 39 into 1.5. Are you getting? So P0 into Q1. These two columns to be multiplied. Multiply कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कितना तक मिल रहा है आपको. P0 into Q1, your first answer shall be 58.5. Next number, again multiplication, 40 into 10. कुछ चीजें आसानी से हो जाएंगी, कुछ में कैलकुलेटर हेल्प की जरूरत पड़ेगी. आप उसे ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई और डिफरेंट स्विच कहीं प्रेस ना हो जाए, आंसर विल गो रॉन्ग. सो अगेन 40 into 10. We are coming back to the multiplication. Third is 400. Number 3 shall be the multiplication between 45 and 1.5. How much shall it come? It is 67.5. And the fourth one, which means the last one, 30 into 1.5. It is 45. Now you should make all the vertical totals of all, right? That is 440 plus 528 plus 100 plus 72. Likewise, are you getting me? So these are the answers precisely can you get. So your first total shall come around 740. Your second total, you can make it on the calculators. It's easy to calculate, right? You can go orally. It is 669. And then after you can calculate the third one, which comes to 629. And the last one shall come around
571. In the sequence we are going off the vertical. So once you have all the answers with you, what you are supposed to do? क्या करने वाले आप? बस सीधा फॉर्मूला में रख दो. देखिए P1Q0 का सिग्मा है तो ये रहा P1Q0 का सिग्मा कितना है 740 अपॉन क्या है P0Q0 उसके बाजू में ही है 669. हमने इसी के हिसाब से यानी कि इस फॉर्मूला के सीक्वेंस के हिसाब से ही कॉलम्स मल्टीप्लाई किए हैं. So that it will be easy to put the answers as well. P0Q0 यानी 669 into 100 यानी कि जब आप 740 into 100 डिवाइड बाय 669 करेंगे तो लास्ट पेयर आपको अराउंड 110.61 के करीब 2 डिजिट तक का डेसिमल आंसर देगा. मेक श्योर कीजिएगा आपका कैलकुलेटर आपको एक्यूरेट आंसर देगा. आपको थर्ड डिजिट सिर्फ देखना है और आगे अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो, आपको जानते हैं लॉजिक, तो उसमें आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं. लेट्स गो टू द सेकंड वन. P1Q1 आप जानते हैं P1Q1 क्या आ चुका है 629 अपॉन P0Q1 यानी कि लास्ट कॉलम 571. बस करना है इनटू 100. बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका नया आंसर यानी कि पाशे का आंसर आपको मिल जाएगा. कम्स टू अराउंड 110.16 या फिर 17. लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कैलकुलेटर यूज करेगा प्रिसाइसली. नंबर 3. अब इन दोनों आंसर को हमें इसके अंदर रखना है फिशर फाइंड आउट करने के लिए. 110.61 इंटू 110.16 ये मल्टीप्लाई जब होगा और जो आंसर दिखेगा उसका सिर्फ क्या प्रेस करना है स्क्वायर रूट, विच मीन्स 110.61 इंटू 110.16 इज इक्वल टू जो स्क्रीन पे दिखेगा बड़ा सा लंबा सा आंसर फुल डिजिट के साथ, उसका सिर्फ स्क्वायर रूट प्रेस करना है एंड दैट स्क्वायर रूट शैल गिव यू अराउंड 110.38. That is the answer about your Fisher's formula. So Laspeyre, Pache and Fisher without changing any units. हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन में सबके यूनिट सेम थे, उस लाइन के कनेक्टेड यूनिट्स, इसलिए हमने इसमें से किसी भी डेटा को चेंज नहीं किया है. मेक श्योर कीजिएगा लास्पेयर, पाशे और फिशर आपकी जो सेक्शन F यानी कि एंड सेक्शन आती है एग्जामिनेशन में, उसमें सबसे ज्यादा 5 मार्क्स का एक वेटेज का इसका क्वेश्चन बनता है. अगर इस 5 को आप सिक्योर कर लें, राइट, सो इट्स गोइंग टू बी योर स्कोरिंग पैटर्न.